आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर करतो की आपण समोर याचा आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत त्यांना आपण शहर उपाध्यक्ष विजयदादा भोसले आणि टीम यांना विनंती करतो की आपण भाऊसाहेब साबळे आणि स्नेहल जाधव। नहीं वो नहीं वो तुम ले लो, वो मामले में तुम नहीं लेते ना बहुत, तो हम बात भी नहीं मत बोलो ना क्या हो चलते चैनल का काम यानंतर विजय चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय दिवसांचा विजय असो, विजय दिवसांचा, विजय त्यांचं नाव विजय असो। इधर देखो सब, इधर देखो, नहीं नहीं रुको रुको, अच्छी फोटो है। इकडे बघा सगळे, इकडे बघा, त्यांना दिसू द्या, त्यांना दिसू द्या खाली लागल्यास खाली लागल्यास त्यांना दिसू द्या ना, सगळं दिसलं पाहिजे। हा थोडा खाली अजून ते दिसत नाही ना अध्यक्ष जे आज सहज मिळाल्यामुळं आम्हाला त्याची किंमत वाटली नाही, आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। आता ह्याच्यामध्ये नंबर 1 जर शिक्षण असेल तर आज वर्तमान परिस्थितीमध्ये चॅनल का मामला आहे। चंद्रकांत जोडे यांना विनंती करतो त्यांनी समोर यायचं आहे। मराठवाडा महासचिव त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। यानंतर अर्जुन पंडित साहेबांना विनंती करतो। परभणी के नगर से गए, वो वहाँ पर भूखे है, देखो आप भूखे दे दो ऐसा है। थोड़ा नीचे करो। आगामी निवडणुकासंदर्भात गौरी उपासक साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। हाँ सर, आज औरंगाबाद में आपका यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग में निर्णय हुए? आजाद समाज पार्टी की तरफ से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? हमारी प्रत्येक माह समीक्षा बैठक होती है आजाद समाज पार्टी। वो अपनी बात को मैं एक्सप्लेन करने से पहले हमारे सभी जितने महापुरुष हैं उनको वंदन करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि आज की मीटिंग का क्या मकसद है। हमारी मीटिंग प्रत्येक माह हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है, और मासिक समीक्षा का मतलब है कि पिछले महीने हमने अपने जिम्मेदार साथियों को क्या क्या कार्य दिया है उसकी समीक्षा होती है। पार्टी को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, चुनाव में हमें कैसे जीतना है, आदि आदि विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। सर जी, आपने भाषण में कहा है कि हम एमएम पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और महाराष्ट्र में भी करने वाले, तो जो कारपोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं अभी उसमें भी आपका साथ रहने वाला है? हाँ, प्रयास हमारे यही है कि महाराष्ट्र की जमीन पर हम लोग एमआईएम के साथ हम गठबंधन करेंगे, और अभी हमारे ही विचारधारा के जो दूसरे गठन भी होंगे, दूसरे दल होंगे, उनके साथ भी करेंगे। मिलकर के हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, और जो मनुवादी लोग हैं उन लोगों को बताने की कोशिश करें कि आज दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जाग चुके हैं, अब तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे जो है तो पहले औरंगाबाद नाम था, बाद में संभाजी नगर किया गया सरकार की तरफ से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो अच्छी बात है, अगर संभाजी नगर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग इस बात को सराहते भी हैं। सर, आपकी पार्टी समर्थन करती है इसको? आपकी पार्टी इसको समर्थन करती है? देखो, सरकार जिनकी है उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। हमारी सरकार आ गई तो हम क्या करेंगे वो भविष्य की बात है। हमने देखा उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्या नहीं किया,
हमने अम्बेडकर नगर बनाया, संत कबीर नगर बनाया, बुद्ध नगर बनाया। उस समय हमारी सरकार बनेगी महाराष्ट्र में तो हम भी बहुत कुछ यहाँ करेंगे, अपने महापुरुषों के नाम पर रखेंगे। आजाद समाज पार्टी के साथ जो है तो अभी महानगर पालिका है सामने, क्या महापौर क्या बन सकता है सर? ऐसा लगता है सर? जिस तेजी के साथ हम काम कर रहे हैं जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी संघर्ष के साथ जो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं जी, और चुनाव के समय भाई चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर सक्रिय होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग मेयर बनाने का काम करेंगे। कितनी पकड़ है, मजबूती है महानगर? महाराष्ट्र में हमारा विधानसभा और वार्ड और विधानसभा के साथ साथ दूसरे हमारे तालुका स्तर पर हमारा संगठन मजबूत है, और उस मजबूत संगठन के बल पर हम कह सकते हैं कि भारी मात्रा में आजाद समाज पार्टी बहुत सारी सीटें यहाँ भी जीतने जा रही है। आप यहाँ पर आए हैं तो महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील माजी खासदार भी है, तो क्या उनसे मुलाकात करेंगे आप? हाँ, उनसे मुलाकात हमारी हुई है। और क्या बात हुई मुलाकात? हम पहली दौर की बात हुई है कि हम करेंगे अलायंस, वो भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, लेकिन सेटिंग प्लान बैठ के करेंगे। भाई कितनी सीटों वो लड़ेंगे, तो हम लड़ेंगे, वो आगे प्लानिंग की बात है। ओके सर, थँक यू. धन्यवाद. त्याबद्दल काय आज आपल्या शहरामध्ये राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक ठेवण्यात आली होती. त्यावेळेस माननीय केंद्रीय प्रभारी उपासक साहेब व त्याचप्रमाणे आपले प्रदेश प्रभारी बागेश्वरजी साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यजितजी साळवे साहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेश महासचिव किशोरांना म्हस्के व तसेच आमचे पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आपले प्रभाकरजी दादा पारदे व आज मराठवाडाहून इतर ठिकाणाहून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा अध्यक्ष व तिथल्या कमिट्या इथं आल्या होत्या. समीक्षा बैठक यासाठी होती की येणाऱ्या 2-3 महिन्यामध्ये जे स्थानिक स्वराज्याचे इलेक्शन आहे त्यामध्ये आपण पुन्हा अलायन्स करायचं व कशा प्रकारे मतदाराला सामोरं जायचं निवडणुकामध्ये, त्यासाठी ही बैठक होती. व आमचं संघटन ज्या पद्धतीनं वेगानं महाराष्ट्रात वाढत आहे व आमच्यासोबत युती करण्यासाठी बरेचसे पक्ष इच्छुक आहे, जसं की एमआयएम आसन व इतर आहे. तरी आम्ही याबद्दल वरिष्ठ लेवलवर सर्व चर्चा चालू आहे व त्या पद्धतीनं आम्ही खाली जे सांगतील त्या पद्धतीने काम करू. एवढं बोलून सांगतो. जय भीम, जय भारत. आज फक्त प्रवेश करून घेतला आणि आमच्या असंख्य कार्यकर्त्यांसमोर आम्ही या ठिकाणी आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश घेत आहोत. काय सांगेल पुढचं? आता कॉर्पोरेशन येणार आहे तर तुमची इच्छा आहे का कॉर्पोरेशनमध्ये उभं राहणार? नाही, उभं राहण्याची इच्छा वगैरे काही नाही, परंतु निळा झेंडाला घेऊन आणि जे सेक्युलर विचारांचे लोक आहेत अशा लोकांना आम्ही महानगरपालिकेत पाठवण्याचा एक निश्चय केलेला आहे. आणि नक्कीच येणाऱ्या काही काळामध्ये महानगरपालिकेमध्ये निळ्या झेंडा घेऊन जे चालल अशा विचारांना, जे सेक्युलर विचाराचे आहे अशा विचारांच्या लोकांना नक्कीच महानगरपालिकेत आम्ही या ठिकाणी आझाद समाज पार्टीच्या माध्यमातून पाठवू असा निश्चय आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. किती मजबूत करणार आहे तुम्ही पार्टी औरंगाबाद शहरात? नक्कीच या ठिकाणी आंबेडकर चळवळीचं जर तुम्ही बघितला तर आंबेडकर चळवळ ही औरंगाबाद जिल्ह्याची एक केंद्रबिंदू म्हणून या ठिकाणी औरंगाबाद शहराला बघण्यात येतं. औरंगाबाद शहराकडे बघितलं म्हणजे आंबेडकरी चळवळीचा चेहरा म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्याला, संभाजीनगर जिल्ह्याला या ठिकाणी बघण्यात येतं. परंतु आजच्या जी परिस्थिती आहे, जे आपण बघतो आहे, आंबेडकर चळवळ ही संपली असं या ठिकाणी काही लोकांना वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही हा एक नवीन पक्ष, नवीन विचारांचा पक्ष जो संविधानवादी आहे, जो संविधानाला धरून चालणारा आहे आणि सर्व समाजाला धरून चालणारा आहे, अशा पक्षामध्ये आम्ही सर्वजण त्या पक्षाची निश्चितच या ठिकाणी ताकद वाढवू. औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक दलित मुस्लिम वसाहती आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही प्रत्येक वसाहतीमध्ये जाऊन या पक्षाचा प्रचार करणार आहोत आणि दलित मुस्लिम ऐक्य करून पुन्हा एकदा जसं वंचित आणि एमआयएम होतं त्याच धर्तीवर आम्ही एमआयएम आणि आझाद समाज पार्टीला एक नवी दिशा देण्याचं काम या पक्षाच्या माध्यमातून करणार आहोत. पुन्हा नाव सांगा दादा. आणि माझं नाव विजय रतनराव भिवसने, राहणार आंबेडकर नगर, सामाजिक कार्यकर्ता.